Okay, but assalamu alaikum. Let's start this. Okay. I hope you can hear me, all of you. Okay. So let's start the revision uh, okay. For programming for the web. For this section of the syllabus, we recommend that candidates have a working knowledge of HTML and CSS. Okay. So obviously, you have to have. I'll share a lecture of HTML and CSS for those who don't know it, and I'll try to revise it in one class. Okay. But let's do JavaScript today. Using JavaScript to add interactivity to web pages, okay, uh, right? In by including inserting JavaScript in HTML, creating and using external JavaScript. Okay, let me discuss all these points a bit fast. So here we go. Now, external JavaScript actually means what? So let's say, let me just go to the desktop. Okay. Oh my God, I have so many folders, but it's fine. So what I can do is I can make folder. I can actually do is rename it as Java revision, and we'll save the files inside this. So what I'm trying to discuss over here is that let me just close some extra tabs. Okay, of access. Okay, so no. First of all, I'll do is I'll simply open as an HTML file and I'll create it. I'll save this file in my folder, which is on the desktop, and JavaScript revision, and I'll save this as, let's say, index.html, obviously, right? It's index. Then what I'll do is I'll open up a new document, and this will be JavaScript file. Okay. I will do is I'll save this file as the JavaScript file. I'll save it as, let's say, uh, my file.js. Okay, it has to be saved as JS, an external JavaScript file. I'll just do something is that just come down. I'll type a very simple code over here, alert, and we'll just have over here is, let's say, hi here. Okay, इसको हम कर लेते हैं save. I'll come to my HTML document और इधर आके हम काम करेंगे. We'll simply come into insert, ठीक है? और इधर आप नोट करोगे, we have over here is कहाँ गया आपका? You'll have is a link. I'm not missing it out. Here we go. Footer, email, HTML. There was one. I want to tell you from canvas. Script, exact. See the script? Click on script. And let me link the my file with the HTML file. Okay. There we go. I need this file. Okay. So you will see is, oh, actually, I had clicked somewhere wrong. So Control X. This link actually should be in the head tag. Remember that. Okay. It should be in the head tag, preferably. So fine, saved it. I'll now just save it. So if I preview the live of this, you will see is hi there is appearing. Okay. Now because I did not type directly script in HTML, I attached it to a JS file. So technically, when they refer to this is what they mean. Actually, I have so many documents opened up. One second, let me just close them. Uh, one second.
right? So you got the external file point. Okay. Next, let's discuss more points. So we have over here is so create and use transcripts, changing the HTML content. Let me zoom in a bit more. Okay. Text, numbers, including calculation and string manipulation. So string manipulation, obviously, there's a full lecture of mine. I'll share it again. Obviously, if I start discussing string manipulation, this needs another lecture. So I hope you can recall string manipulation and array manipulation. Okay. Images and image properties. So as far as image and image properties is concerned, obviously, I have to talk about all things. I can't keep on ignoring everything. For example, what I'll do is I'll come to the desktop, ठीक है? और मैं काम करता हूँ कि do I have an image? Yes, I have an image. I will just copy this and I'll place it in JavaScript revision. ठीक है? Here you go. So I have this image in JavaScript revision, or it's capture.png. I'll just name it as rename it as one.png, right? It's .png. याद रखना. अब हम ये चाहेंगे कि because I want to refer to over here is to the syllabus. How do we work with image properties? Well, I'm sure आप लोगों ने किया हुआ है, मगर मैं revise कर रहा हूँ, तो इसलिए let's talk about it. So what I'll do is मैं अब let me do it internal scripting. Okay, let me forget about this. So हम क्या करेंगे इधर? We'll use over here is our script का tag. ठीक है? And in order to explain this, हम एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं function. Okay. And let's say I'll call me, right? और एक काम करते हैं, हम इधर आके बनाते हैं after the script tag. Remember, after the script tag, I'll use is the image source. Okay, don't define anything the source, और इसको हम ID देते हैं, let's say is equals to me. ठीक हो गया? Right. और we'll come here. image source find कर दिया हमने. इधर में आता हूँ और इधर में लिखता हूँ. इसको मैं let me give it more space. So we can actually do is, ठीक है? Document document dot get element by ID और इसका okay, hold on. इसकी library should appear. See, me dot src is equals to one dot png. ठीक हो गया? Right. So okay, we have to make the button. Let's do that. So input type button value. We can give it a whole button. Click and on click should be call me function. Right. File save view over here index. Okay. So if I click on this, you see the image is appearing. Actually, it's just not that it's just a link. We're not discussing obviously linking. Linking can be done in HTML. The point that we're discussing over here is that what we've done is we simply made is a button. The button is calling this function. The function is saying, go to my document, get an element by ID me. It says that do you have any tag by the name of me? So वो line आता है 25 पे. It says that we have an image tag.
और image की जो source है it's empty, but I have defined over here is the ID of the image tag, and that is me. तो वो कहता है dot source of that should be one dot png. So this was one of the example in which we can actually use this, or yeah, this has appeared in the past report. This is one of the most typical thing that comes in image and image properties. Okay, इसके लिए further obviously image you can define the width and the height, IDs वगैरह उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं नोट शेयर करूंगा और मैं और भी बाकी जो होंगी थोड़ी बहुत वो भी मेंशन होंगी. So change HTML styles. अच्छा, can someone tell me you can hear me or not? Can you hear me? I hope I'm not talking to myself. Yes. कौन ऑनलाइन है? Iman, Hur, Hadia, can you hear me right? Yes. Okay, thank you. Okay, फिर हम कह रहे हैं change the HTML style. So change style of HTML elements using the document get element by ID style dot property dot new style. अच्छा, you probably might remember when I did validation, मैंने dot style की बात की थी, like stall that dot background, stall that dot border color when we made an HTML form, उसमें हमने ये किया था. Yes or no? आपको याद होगा. Okay, so मैं ये लेक्चर भी शेयर कर दूंगा. ओके, बिकॉज आई हैव टू मेक अ फुल फॉर्म. इफ यू वांट आई कैन डू इट राइट नाउ. व्हाट डू यू से? दे स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. प्रॉपर्टी मतलब स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल डॉट बॉर्डर, स्टफ लाइक दैट. आई गेव दिस एग्जांपल इन द वैलिडेशन फॉर्म्स, वहीं इसका यूज होता है ज्यादा. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज आपको ये आना चाहिए. ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट. हमने ये किया हुआ है, आपको जेन में होगा. ओके, राइट. अब अगला डिस्कस कर लेते हैं. शो हाइड एलिमेंट यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट कैन डॉट विजिबल एंड डिस्प्ले. अच्छा, विजिबल डिस्प्ले क्या है? या इनमें डिफरेंस देख लेते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई कैन नाउ डू इज, लेट्स से मैं काम करता हूँ. लेट मी जस्ट लेट जस्ट गेट रिड ऑफ दिस. इसकी जरूरत नहीं है, और आई डोंट नीड दिस. हम एक काम करते हैं, इधर मैं बना लेता हूँ एक सिंपल इनपुट टाइप बटन वैल्यू. इसको हम कह देते हैं हाइड. ठीक है, और हम कहते हैं ऑन क्लिक पे इसको कह देते हैं हम, लेट्स से हाइड टेक्स्ट. विल मेक अ फंक्शन. ओके, हाइड टेक्स्ट, राइट. ओके, और इसी तरह I can just do is, just to save time, Control C. I can do is V, input type button values. We can say over here is simply is show, and we can say is show text. Show text, right? So we have two buttons. इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिख लेते हैं. स्क्रिप्ट में हम लिख लेते हैं let me make function. So I can make is a function, and the function could be over here is hide text. Okay, is the spelling correct? जी वही है. ठीक है, हाई टेक्स्ट, इसका कोड ब्लॉक, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं हाई टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. या मैं कोई डिफाइन कर दूं नीचे जाके, डॉट स्टाइल डॉट लेट्स से विजिबिलिटी, और इसको कर देते हैं इज इक्वल्स टू हिडन. अच्छा, व्हाट आई मीन टू से इज के मैं चाह रहा हूँ इधर कहीं
we can do is we can make some text over here. So I can just do is have over here is, let's say, paragraph ID is text, okay, and uh, some random text I can display here. Okay, right. So I was saying is document dot element by id by text dot style dot visibility hidden. ठीक है, ये मैंने बना लिया आपका फंक्शन टेक्स्ट का. इसी तरह what I can do is control C and इधर ही आके sorry इधर ही आके control V करके I can make is show text, और यहाँ hidden के बजाय what we can do is we can make it visible. ठीक है, so let's see what do we have. Some text here. अच्छा, इसको करते हैं save. ठीक है, right, और let me just open it up, come to desktop. ओके, ये हमारे पास आ गया. ठीक है, इसमें हम करते हैं hide text, show text. हाँ, वो वो why is it not working? Show, this was your show text spelling, yeah, txt. Why is this the coding not that much visible? ठीक है, anyway, वो spelling, always be careful about the spelling. एक सेकंड में इसको visible से ज्यादा कर दूं for all of you. Font तो ठीक है, let me make it like 12, बल्कि 14, and interface, yeah, high contrast is better. Okay, let me just make it this. Apply, close. Yeah, so I was saying was ये हमने कर दिया. ठीक है, इसको हम करते हैं save. Now I can directly go here, open this. So I'm here, show hide, show hide. अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा. But then let's talk about the point कि what is the difference between this and the उसमें they mentioned two things. क्या था उसमें? They mentioned that document will tell you the visibility and display. So visibility and display में फर्क क्या है? Let's talk about this. Let me open a new file because मैं काम करता हूँ. मैं इसको करता हूँ Control A, Control C, because I don't want to waste time typing all this. Just need to explain you the concept. हम आते हैं इधर HTML में, create करते हैं. ठीक है, और इसके ही कोडिंग में I'll just do is Control A, Control V. ठीक हो गया, and we'll just make some changes to the code. Like for example, what we'll do is इसको हम change कर देते हैं. Display is equals to text style, hide text. Yeah. Instead of this, we can simply write is dot, not dot style, dot display is equals to, इसमें यूज होता है आपका none. ठीक है, और इसमें we can use is dot display is equals to, we can use over here is block. ठीक है, anything else we have to change? I don't think so. I'll just save this as let's say I'll call it, let's say, display.
So if I come here and if I open up display, you will somehow see it's work for फर्क क्या होगा? If I say is hide, show. Do you see? ये ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक डिस्appear हो जाता है. इस केस में क्या हो रहा था? If you look at this, hide, show, it remains over there. This case, what's happening is when I hide it, it disappears, it goes up, show comes back. Because this is actually in a block. So, जो आपका ये है, oh, sorry, not Python. Display actually none means कि don't display anything. Display block, show the block. Block doesn't mean कि block it. Block means कि blow up पूरे block को show कराए. So display और उसमें बस ये फर्क है. Block आता है और उसमें block नहीं आता. Okay, hope you got the point. Right? Okay. So ये हम discuss कर लिया. Display data in different ways, including write into an HTML element using inner HTML. We have discussed many times. Okay? कि ये जब भी हम tag define करते हैं, ये inner HTML में होता है. ठीक है? The HTML output using document.write. Yeah, obviously you know it. An alert box using the window.alert. ठीक है? The browser console using console की जरूरत नहीं है because हम document use कर रहे हैं तो console write करने की जरूरत नहीं है. We using that way. HTML elements including on load, on click. So on button pay, on instead of on click, you can have either of them. Okay, when you on bring the mouse over, out, okay, any of them. Provide user interaction using confirm and pop-up messages. ठीक है? Confirm को बेटा discuss मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं क्योंकि confirm हमने ज़्यादा किया नहीं हुआ. Let's discuss confirm. So listen carefully. So confirm में ही हम कर सकते हैं. Let me give an example of confirm. Okay. This is the reason why we have discussed from the syllabus. So I can just name it as uh, confirm, let's say navigation lecture. Okay. और इसमें हम करते ये हैं कि मैं let's say body के बाद यहाँ लिख लेता हूँ. Okay. A href is equals to https colon com. Right, I can say is on click. I can say is equals to return खुद आना चाहिए था ये क्यों नहीं आ रहा it's in my body ठीक है अच्छा anyway I'll make a function पहले function बनाया नहीं हुआ ना इसलिए नहीं आ रहा confirm let's name it as confirm navigation okay right so this is what I've made right और मैंने इसको डबल कोट्स में डाला है ठीक है इसके बाद all I do is close this और यहाँ मैं लिख लेता हूँ go to the right ठीक है इसके बाद हम क्या काम करते हैं स्क्रिप्ट बनाते हैं स्क्रिप्ट में क्या बनाते हैं let's simply let me get rid of all this okay हम यहाँ बनाते हैं फंक्शन वही जो मैंने लंबा सा नाम रख दिया है ये okay function will be this ठीक है और इसमें what we'll do is we'll says I'll just explain all this don't worry return uh, confirm are you sure you want to leave the page right
सो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज को डिलीट कर देते हैं। So we can simply do is we can simply delete all this. I don't want any confusion to be made. Let me make it working. फिर मैं आपको इसको explain करता हूँ। मैं कोड भी आपसे शेयर सारा कर दूंगा, ठीक है। This is the confirm navigation example, right? So इसको हम कर देते हैं save. Let me open this. So if I click on this, it will say, see, the page says, are you sure you want to leave the page? If I want a page right now, वो पहले पूछता है आपसे. If I say okay, it should go to, see, it's going there, saem.com, ठीक है ना, right? So ये confirm होता है, like, do you want to leave the page, you want to leave the application. अब ये काम किस तरह कर रहा है, इसको देख लेते हैं. तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक बनाया, ahref links to this website. On click, it's a on click return confirmation, ठीक है ना. एक्चुअली रिटर्न आपको यूज करना पड़ता है इसमें. दिस इज समथिंग न्यू. इसके बगैर काम नहीं करेगा. फंक्शन कंफर्मेशन मैंने कहा रिटर्न कंफर्म आर यू श्योर. सो यू जस्ट हैव टू यूज रिटर्न ओवर हियर. ओके, रिटर्न कंफर्म आई वांट टू, सो इट विल कंफर्म. अगर वो काम करता है तो फिर इट विल टेक यू देयर. दिस इज हाउ योर कंफर्म एक्चुअली वर्क्स. ओके, यू शुड नो दिस. मैं कुछ बताऊं, उसकी फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं हम. थोड़ी सी एडवांस. लेट्स डू इट, ओके, बिकॉज आज टाइम मिल रहा है तो हम कर लेते हैं. let's see, let me just make a new example. So example में देता हूँ आपको. Create, come on, hurry up. Yeah, I said create. What? Okay, okay, don't create. I'll just save this as something else. अच्छा, तो हम बनाते हैं बटन को ही हम यूज कर लेते हैं इधर. Let's say I'll say over here is input type button, और on click पे हम कह देते हैं delete item. Okay, we'll make a function for delete item. Okay, और हम यहाँ लिख देंगे, let's say delete item. Just give an example के how can we actually make something like this. ठीक है, delete item, right? Oh, sorry. मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू में लिख लेते हैं delete item. ठीक हो गया. इसके बाद we'll do is obviously we don't need this. इसको कर देते हैं, ठीक है. And then we'll do is we'll make is delete item का एक function. Let's see how confirm can actually help us here. So Control V, delete item को मैंने कॉल करते हैं. इसके बाद what we can do is I can actually अच्छा, हम बनाते हैं फंक्शन delete item और इसमें व्यू लेट करते हैं. I'll say let response is equals to uh, firm. Are you sure you want to delete this item? ठीक है, और मैं कहता हूँ इसमें ठीक है, राइट. और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि if user response
ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं अलर्ट। हम दे देते हैं इधर आइटम डिलीटेड। एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका पूरा कोड उस तरह नहीं आएगा। इट्स जस्ट एन अलर्ट। ठीक है। और एल्स हम कह सकते हैं इधर अलर्ट। हम कह देते हैं इधर लेट्स एक्शन कैंसिल। ठीक है। अच्छा, सो ब्रैकेट में चेक कर लूँ। 1 2, इसका ब्रैकेट हमने यूज किया, इसका बंद किया। एल्स अलर्ट, इसको भी अगर मैं डाल दूं, दिस नो हार्म। ठीक है, इसको करते हैं सेव एज, और इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स से आई कैन मेक इट एज, इसको सेव करते हैं डिलीट आइटम। लेट्स से डिलीट आइटम के नाम से। ओके, so let's check this out. So if I open this and if I say delete item, it says are you sure you want to delete this item? I'll say okay. ठीक है, item is deleted. Okay, मैं इसको refresh करता हूँ, मैं कहता हूँ delete item, do you want, so I can cancel it, मतलब action cancel. ओके, सो ये काम कैसा कर रहा है? वेल, लाइन नंबर 11 हमने एक बनाया इनपुट बटन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो तो पता ही आपको। हमने लाइन नंबर 14 में फंक्शन बनाया। ठीक है। यस, लाइन नंबर 16 समथिंग न्यू, लेट यूजर रिस्पॉन्स। सो हम यूजर्स का रिस्पॉन्स होता है ना, सो हम क्या, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेट यूजर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू वही कंफर्म दिस। सो अगर ये लेट यूजर इज इक्वल्स टू दिस आता है, तो क्या करें, इफ यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ यूजर रिस्पॉन्स में ट्रू आता है तो अलर्ट दे दे ये, एल्स दे दे ये। सो ऑब्वियसली इफ हैज टू बी यूज विद दिस, प्लीज की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। हाउ कंफर्म कैन बी यूज, इस कंफर्म को बस ये दो जगह पे यूज होता है, नो नॉट मच। दिस इज हाउ वी कैन यूज कंफर्म। आई होप इट्स क्लियर, राइट? तो ये बस एग्जांपल्स याद कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, नॉट मच ऑफ इट, ट्राई टाइप इट योरसेल्फ, यू विल गेट टू नो। एंड देन व्हाट डू वी हैव? ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया the structure and the syntax of JavaScript code, including JavaScript and composing of values, literals। ठीक है, राइट। अच्छा बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं ना कोई 5-6 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन बैक करते हैं। ठीक है, सेम लिंक में। ओके, यानी आई शेयर अनदर लिंक, क्योंकि वो फिर वो 10 मिनट्स का वेट करेगा, बल्कि 10 मिनट्स का वेट कर लेते हैं। 10 मिनट्स विल ज्वाइन अगेन टू फिनिश दिस। ओके, ज्वाइन बैक इन 10 मिनट्स।